हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज आम +2 सेकेंड ईयर रो पॉलिटिकल साइंस रो सिलेबस और तर एग्जाम पैटर्न विषय डिस्कस करबा। सो पॉलिटिकल साइंस रे 100 मार्क रो एग्जाम दबा 2024 रे। सो तुम मानकर सिलेबस कौन अच्छी? सिलेबस यूनिट 1 रे अच्छी डेमोक्रेसी इन इंडिया, जो थी कि तुमने पढ़ो डेमोक्रेसी रो मीनिंग, टाइप एंड फ्यूचर्स, चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया, इनइक्वालिटी, लिटरेसी, रीजनलिज्म, नक्सलिटी प्रॉब्लम, जेंडर इनइक्वालिटी। देन पार्टी सिस्टम इन इंडिया, जो थी तुमने पढ़ो मीनिंग, टाइप, वन पार्टी डोमिनेंस, कोalition पॉलिटिक्स, रीजनल पार्टीज। देन यूनिट 2 रे तुमने पढ़ो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया, जो तुमने पढ़ो फेडरलिज्म इन इंडिया, से तुमने तार फीचर्स, सेंटर स्टेट रिलेशन, रिसेंट ट्रेड्स इन इंडिया, फेडरलिज्म। देन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, जो तुमने पढ़ो रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज, कंपोजिशंस एंड फंक्शंस। देन यूनिट 3 रे तुमने पढ़ो डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया, जो पढ़ो चैलेंजेस टू द नेशन बिल्डिंग, तार मीनिंग, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, रीजनलिज्म, टेरोरिज्म, रेमेडीज। देन तुमनकर अच्छी कंटेम्पोरारी इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो तुमने पढ़ो पॉपुलर मूवमेंट्स मानक विषय, जो तुमने पढ़ो वुमेन मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन मूवमेंट्स, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट। देन तुमनकर यूनिट 4 रे तुमने पढ़ो यूनिट 4 रे तुमने पढ़ो इंडियन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, से तुमने पढ़ो इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो तुमने पढ़ो बेसिक फीचर्स, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जो तुमने पढ़ो चाइना एंड पाकिस्तान। देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यूएन, मेजर ऑर्गन्स, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, रिफॉर्म ऑफ द यूएन, India's position in UN, International Economic Organism, World Bank and the IMF. Then Unit V रे तुमने पढ़ो issues in international politics, जो थे challenging dimension of security in contemporary world, जो थे तुमने पढ़ो traditional security concern, arms race and disagreements, non-traditional security concern, human security, global poverty, inequality, health and education. Then environmental and natural resources, जो थे तुमने पढ़ो global environment concerns, developments and environments, global warming and climate change। तो ये आम जाना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क पाइका तुमको 3 प्रकार रो क्वेश्चन पचरे जीवो, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप एंड देन तुमने पचरे जीवो लॉन्ग टाइप। सो ग्रुप ए रे तुमको ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन पचरे जीवो, जो थी तुमको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया 15टा करबा पाइका, 15टा को 15 मार्क। देन आंसर इन वन वर्ड, गोटे शब्द रे उत्तर किंबा संक्षेप रे उत्तर किंबा करेक्ट द सेंटेंस किंबा शून्य स्थान पूर्ण कर किंबा ट्रू और फॉल्स, एमती क्वेश्चन पड़ो 15टा पड़ो, 15टा को तुमनकर 15 मार्क। देन तुमनकर ग्रुप बी बस शॉर्ट टाइप रे तुमनको पड़ो आंसर विद इन 2 और 3 सेंटेंस, 2टा किंबा 3टा वाक्य रे तुमनको आंसर लिखिबार थिबो, जो थरे तुमनको 14टा पड़िथिबो क्वेश्चन, सेथरे तुमनको 11टा करिवार अछि। गोटे क्वेश्चन नो मार्क होची 2 मार्क, तो तुमनको सेठी मिले जिवो 22 मार्क। देन तुमको पड़ो आंसर विद इन 5 और 6 सेंटेंस, जो थी कि तुमको 8टा क्वेश्चन दे देथिबो, तुमको सेठिरु 6टा क्वेश्चन करिवार अछि। गोटे क्वेश्चन नो मार्क होची 3 मार्क, तो तुमको सेठी 6टा कले 18 मार्क। तुमको 20 ग्रुप बी बा शॉर्ट टाइप रे तुमको सेठी
40 मार्क मिल जाउची। ग्रुप ए रे तुमको 30 मार्क, ग्रुप ई रे 40 मार्क। देन लॉन्ग टाइप बा ग्रुप सी रे तुमको प्रत्येक यूनिट रु 6टा क्वेश्चन पड़ी थिबो। तुमको सेथरु 4टा क्वेश्चन आंसर करबा 7.5 into 4 तुमको ग्रुप सी रे 30 मार्क मिल जिवो। ग्रुप ए रे तुमको 30 मार्क, ग्रुप बी रे 40 मार्क एंड ग्रुप 3 रे तुमको ग्रुप सी रे तुमको 30 मार्क। टोटल एमती तुमको 100 मार्क रो एग्जाम दबार अच्छी। देन तेबे जान नबा तुम ओडिया सिलेबस कौन अच्छी सेम अच्छी, ओडिया भी सिलेबस सेम अच्छी, बस ओडिया रे कौन अच्छी विषय गुड़िक से विषय जान नबा। सो तुमर ओडिया रे अच्छी यूनिटी 1 भारत रे गणतंत्र, जो थे गणतंत्र भारत रे दलीय व्यवस्था। देन यूनिटी 2 रे अच्छी भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया, जो थे भारत राष्ट्र संघवाद, भारत रे स्थानीय शासन। देन यूनिटी 3 रे तुमको अच्छी भारत रे गणतांत्रिक प्रक्रिया, जो थे राष्ट्र निर्माण प्रति आह्वान आउ भारतीय राजनीति रे समसामयिक प्रसंग विषय तुमने पढ़िबो। देन तुमको यूनिटी 4 रे तुमने पढ़िबो विश्व राजनीति रे भारत, जो थे भारत वैदेशिक नीति आउ अंतर्जातीय संगठन पढ़िबो। देन पंचम एकक रे अंतर्जातीय राजनैतिक प्रसंग, जो थे समसामयिक विश्व रे सुरक्षार परिवर्तनशील परिसर एंड परिवेश और प्राकृतिक संबल विषय तुमने पढ़िबो। सो फ्रेंड्स, जदि तुमको वीडियोटी भल लगी तो वीडियोटी को लाइक करने सह सांग मानक सह शेयर करने को जमा भी भूलबनी। और जदि किसी डाउट थाए तो मैंने कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर निश्चय जनइब। एंड बहुत जल्दी तुमर पाठपढ़ा स्टार्ट होगा जाऊँगी। तो जो मैंने भी इंटरेस्टेड अच्छ मो क्लास करने का, तो से माने मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सेट कर दियो। फल जहाँ भी किसी वीडियो मु मो चैनल रे पोस्ट करी तार नोटिफिकेशन तुम पाखरे पहुँच जिवो। थैंक्स फॉर वाचिंग।